you've been doing so many things and so vibrantly. What is your ultimate goal? जिस तरीके से आपके मॉम डैड आपसे बात करते हैं उस तरीके से तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तू पहले भी फेल हुआ था या तू कर सकता है, डजंट मैटर, तूने पहले भी किया था. सो बेस्ड ऑन दैट सिक्योरिटी की जड़ और इनसिक्योरिटी की जड़ घर से ही आती है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि डोंट कॉल एनीबॉडी अ गुरु, एंड बिकॉज एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड देयर ओन पाथ. सो आप किसी का पाथ ढूंढ रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन चेंजेस द पाथ एंड जैसे अरे यार आपने सब कुछ बदल दिया. फाइंड अ क्लब where there are people who are doing similar work that you are doing. Go and contribute to that club. उसके बाद अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएगा. हो सकता है कि आपके घर में आपने एक सीक्रेट शेयर करी और आपके भाई ने जाके वो वाला काम कर दिया और आपने नहीं किया, आपका भाई उस कारण से. लेकिन you have to see the family has become successful because I contributed something. Hi, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode of the AskAviArya show, where we are bringing on guests who are looking at questions around life, entrepreneurship, happiness, and digital marketing, because we know one person's questions answered well can help all of you people. So thank you all for joining, and let's welcome our first guest for today. Hi Radha, how are you? Very fine, thank you. Honored to be here, to be with you, and to get some insights and to share some whatever I can. Awesome. Thank you. So yes, this is going to be like a fast-paced thing. Anyway, it's between 5 to 7 questions within 21 minutes. So let's start. Okay, so my first question is, you've been doing so many things and so vibrantly. What is your ultimate goal? Ultimate goal is that goalposts keep shifting. Honestly, that's a very good question, but I have been asking myself this. According to me, I don't think anybody can say I know what I want, because these wants keep changing. Number one is based on, Hindu philosophy says there is brahmacharya and there is sanatan, and then there is, you become a saint. There are different, one is that way of thinking. The other way of thinking is when I know more, I want to do more. Then there comes a stage when you know more, you want to do less and understand more. So between doing more and wanting to do even more, when I see other people doing stuff and I'm like, this is what I want to do also. I want to do more. And when I continue seeing that, I feel I need to do less to be able to reach there. So between wanting to do more and wanting to do less, उसके बीच में मैं कहीं जूझ रहा हूँ अभी. Why I ask this question is because you are an inspiration to so many entrepreneurs, and they look at you to carve their path. So from there, this question came. That's why I always say कि don't call anybody a guru, and because everybody is trying to find their own path. So आप किसी का path ढूंढ रहे हो and all of a sudden that person changes the path and जैसे अरे यार आपने सब कुछ बदल दिया. So दूसरा सुनो सबकी करो अपनी, and you can just about follow somebody or somebody's journey for a while, because everybody's trying to figure it out. Nobody's got it figured out. If I ask you what is your driving force in a phrase? Brian Aviana. Oh, that's so sweet. And inspiration? I think inspiration mostly is my, in my family, I think it's my mom, and I think otherwise right now my latest inspiration, when I was in school, it was Maradona. And then it became some cricket star, and now it's Robin Sharma. Oh, wow. So I think one day we should connect with Robin Sharma. It will happen, 100%. I have no doubt about it. Yes. I would say, what is the thought in mind when you start your day? The first thought which comes to your mind is like, for an entrepreneur, sometimes they sleep with the idea what they're going to do next day. Morning they come up with the pressure of, okay, this needs to be completed, if nahi hoga to what will happen. So as you've reached to a very high level, and again I would say everybody is looking at you, learning from you. So I would like to understand, what is the first thought when you open your eyes? What is the first thought you have? First thought is I hope mom and dad are safe and healthy and everything is okay with them. That's the first thought that I get every morning. And after that, I think about my own family. I hope everything is okay.
and then on automatically my thought goes towards my breath, because I've trained it in such a way. It goes towards my breath to be able to say कि कितने सारे बच्चे हैं, so thank you God, and then automatically my thoughts try to go to office. रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ and all of that. So first 10-15 minutes I try not to take the thoughts to the office, and I do my own kind of meditation, talk to the sun. While I'm in bed, I don't get up and go out, but while I'm in bed, I'm talking to, you can talk to any energy you want, or किसी को भी आप देवता बना सकते हो. So I talk there and I say that okay, now I'm going to I've got these two phones. एक का नंबर शायद सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक का नंबर सबके पास है. So when I say I'm going to put on this phone, इसमें सारी दुनिया के messages आएंगे. So give me the strength to be able to deal with it. Great. That's such an insight. And I think so every entrepreneur will be like very happy to listen this answer, because what I felt is like, most of the people I'm speaking to right now, the new people who are coming into the business, they're always day and night thinking about the work, and they're like, the balance is getting lost. So I think so your answer was a great inspiration here. And I just wanted to understand that collaboration. We are using this term quite often these days, collaborative collaboration, and it has been पहले से भी यूज होता हुआ आया है. बट आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, और कैसे जो यंग हैं उनको कैसे कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो कंपटीशन में आ जाते हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं. तो वो कोलैबोरेशन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसे प्रोसीड करना चाहिए? इफ यू कैन गिव सम इनसाइट ऑन दैट. See, first, it's a very good question. और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कोई भी चीज नई नहीं है. Nothing is new. ना स्पेस पे जाने का हमारा ड्रीम नया है, ना मेटावर्स नया है, ना सोशल मीडिया नया है. ये सब नए फॉर्म्स में हमको बताया जा रहा है. एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, उसका एक माइक्रो और माइक्रो वर्जन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट पे जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी शूज को टाइप करने जाते हैं, ढूंढते हैं, अगले दिन आपको सारे शूज दिखने लग जाते हैं उसी टाइप के. तो इट्स अ स्मॉल टेक्नोलॉजी विच इज पार्ट ऑफ अ लार्ज टेक्नोलॉजी. दैट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब. कहीं ना कहीं उस वेब में है, और आपने वेब में अपना थॉट और इंटेंशन टाइप करी, वो वेब की टेक्नोलॉजी वो चीज आपके पास ले आती है. सेम वे आप दुनिया में यू पुट इन थॉट्स इन द यूनिवर्स, एंड दैट थॉट गेट्स दोज थिंग्स टू इट्स नॉर्मल. सेम वे विद कोलैबोरेशन. कोई भी चीज पुरानी, हम स्कूल में जब क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हम अकेले नहीं खेलते थे, हम लोगों के साथ खेलते थे जो दूसरे क्लब्स में थे. मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, तुम्हारी गली में खेल सकता हूँ, तुम्हारे शहर में खेल सकता हूँ. सो वी ऑल प्लेड विद अदर पीपल. वी डिडंट थिंक कि अगर मैं उसके साथ खेलूंगा, उसकी टीम में खेलूंगा और उसके लिए गोल स्कोर करूंगा, तो मैं फुटबॉल में क्लब्स होते हैं, यू प्ले फॉर डिफरेंट क्लब्स. उन क्लब्स को आप जाते हो, जिताते हो, जाते हो. So the idea is, in business also you must realize that you have to go in and play with other people and add value to their clubs. Everybody is a club. 5-member team, 6-member team, 20-member team, या BNI हो गया, association हो गई. Find a club where there are people who are doing similar work that you are doing. Go and contribute to that club. उसके बाद अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना, automatically आपके पास आना शुरू हो जाएगा. हम अकेले करते हैं, मेरे हिसाब से, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, हम अकेले इसलिए चलते हैं 2 रीजन से. हमको साथ चलना नहीं आता, और दूसरा हमें लगता है कि हम अगर किसी से कम है तो वो आपको पता लग जाएगा. अगर मैं कल से एक आपके साथ टीम बना के चलूं, भ्रम क्रिएट किया हुआ है लोगों ने एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में, वो टूट जाता है. तो इसलिए लोग अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं, इसलिए वो कोलैबोरेट कर नहीं पाते. सो बट ये हमेशा पुराना कॉन्सेप्ट था, और अभी भी लोगों को समझ आ रहा है कि वी हैव टू वर्क टुगेदर टू बी एबल टू गेट रिजल्ट्स. यस, देयर आर सीक्रेट्स व्हिच हैव टू बी शेयर्ड. नाउ द थिंग इज, इफ यू वांट कोलैबोरेशन टू वर्क, इट हैज टू वर्क लाइक अ फैमिली. फैमिली में क्या होता है, आप लोगों को सीक्रेट्स बताते हो. कोई चीज होती है जो आपको, अब हो सकता है कि आपके घर में आपने एक सीक्रेट शेयर करी और आपके भाई ने जाके वो वाला काम कर दिया और आपने नहीं किया, आपका भाई उस कारण से. लेकिन यू हैव टू सी द फैमिली इज बिकम सक्सेसफुल बिकॉज आई कंट्रीब्यूटेड समथिंग. तो उसमें आपका जो है ना, वो ईर्ष्या, द्वेष, वो सारी चीजें बड़ी सॉलिड तरीके से टेस्ट होती हैं. बट ये जो इंसाइट है, जैसे क्योंकि यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनने में आ रहे हैं, उनमें ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. I think so you will accept this, because you are more exposed to many entrepreneurs coming up. They have a lot of insecurity, and if they have even this much of the content with them, they feel that if I share this, I'll be lost. Right. So somewhere
I have always, when I interact with them, I've always seen, if they're insecure about this much content, so how the person can think about growing beyond the, line. So to change, especially if I talk about India, if you wish to convert this major youngster, major youth into the entrepreneur, the major thing has to be converted, that insecurity has to be taken care. But what steps should we do, or what step those people should accept? वो confidence वो कैसे लेके आए अपने अंदर कि वो अपने ऊपर मेहनत करके तो confidence लेके आए कि हाँ, we can create our thing. We have the power of imagination. We have the power of creating something on our own. We don't have to just take somebody and deliver that. मुझे लगता है इसके दो वो है. एक तो जो भी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आती है वो घर से आती है. जिस तरीके से आपके मॉम डैड आपसे बात करते हैं उस तरीके से तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तू पहले भी फेल हुआ था, या तू कर सकता है, डजंट मैटर, तूने पहले भी किया था. सो बेस्ड ऑन दैट सिक्योरिटी की जड़ और इनसिक्योरिटी की जड़ घर से ही आती है. मॉम डैड की अगर आप लड़ाइयाँ देखते होते हुए तो वहां से इनसिक्योरिटी आती है कि मेरा क्या होगा अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो. सो एवरी सिचुएशन इन द हाउस क्रिएट सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी. द अदर थिंग इज, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, हर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और उससे पहले उसको एक जॉब में जाके एक एम्प्लॉय बनना चाहिए, तब जाके उसको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. वो कुछ सीखेगा, संगत में होगा, कोलैबोरेशन सीखेगा कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है वर्सेस दूसरों की क्या स्ट्रेंथ है, कितना देना पड़ता है ताकि बाकी वापस मिले. ये सब चीजें वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में अकेले अपने ऑफिस में 2-3 लोगों के साथ नहीं सीख पाता. सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज इट स्टार्ट्स एट होम. So if you're training entrepreneurs at home, you must understand हर मैसेज घर पे देखा जा रहा है तो ध्यान से बात कीजिए. My dad was always very his उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चली, लेकिन उन्होंने he gave very bold discussions at home. कॉन्फिडेंटली बात करते थे, नहीं सब हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम तो कर लोगे, तुम्हारे को मेरे को पता है, तुम उठ जाओगे सुबह 5 बजे, तुम पहुंच जाओगे. तो वो एक ऐसा पॉजिटिव प्रेशर सा होता था कि हाँ हम कर सकते हैं. और दूसरा, गेट अ जॉब. एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी बडी शुड गेट अ जॉब, क्योंकि अब ये थियोरी में नहीं सिखाया जा सकता कि आप कितना छुपाओ और कितना दो. जब आप जाके ऑफिस में जाके देखते हो कि जो लोग स्टार जो राइज कर रहे हैं वो मैनेजर्स और वो सीनियर्स हैं जो दिए जा रहे हैं, दूसरों को सिखाए जा रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं, शाम को अपना काम करने के बाद दूसरे को सिखा रहे हैं, वो लड़का ग्रो करता है. तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आता है कि ग्रो करने के लिए देना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है. यू हैव टू, जैसे वो किसमें था कि मतलब वी आर ऑल इवन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, आप अपने आप को जितना लास्ट में अगर शायद एक थोड़ा सा निशान रंग का रह जाता है, उसके बाद तो हमको पूरा मिटना पड़ता है किसी और के लिए, तब जाके हम बोलते हैं कि यस शायद हम भी कुछ कर गए. लेकिन हम सोचते नहीं हमारा ही पूरा नाम हो जाए, और वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता. सो बट ये बात काम करने से समझ आ जाती है. इन अ नाइस ऑफिस वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, यू वर्क एंड यू रियलाइज ऑल ऑफ दीस थिंग्स. Yes, so I'm really looking forward to an entrepreneur college or a school by you in India, so that we can get a proper insight of how we need to go, proper system where people can be trained to get into that. Can I ask you a very like a small question? This is Please my ask. this might not be this. Anything. Do we have some filtration for the coaches, because every second person is a coach right now, and with my experience, I could say I found that few people were not eligible for it. Might be I'm not judging them, but No, I felt it. So I'm just sharing it very openly, that I felt that something is missing. What they're trying to say, there is a gap in between their saying and they're doing it. So you could feel it. So how do and a lot of people they don't get the right mentor because उनका कहीं experience गलत हो जाता है, तो they stop interacting with the other people also. Sure. So there is a big gap here. So are we doing something, because you are in this field and you know so many people around who are active, who are so active and at a very high levels in this field? Do we have any filtration in between where there is some association which is filtering them, or how do we identify them? Because everybody is a coach. Yeah. See, when I was 25 years old and I was starting a travel agency, आपको एक फोन चाहिए था और आप बाहर एक पोस्टर लगाते थे, बोलते थे मैं ट्रैवल एजेंट बन गया. लाखों लोग ट्रैवल एजेंट बन गए क्योंकि उस टाइम बड़ा अच्छा चल रहा था. फिर 2009-10 के आसपास इंटरनेट मार्केटिंग आया.
अब उस टाइम फोन भी नहीं चाहिए था, लैंडलाइन, जिसके पास मोबाइल फोन था वो इंटरनेट मार्केटर बन गया। आज की डेट में अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप उस पर लिख देते हो आई एम अ कोच, और आप कोच, उसी दिन से आप कोच बन जाते हो। सर्टिफिकेशन नहीं करी तो 4 लोगों के वेबिनार जाके, वो 2-2 दिन के वेबिनार की सर्टिफिकेट के बेसिस पे लोग कोच बन जाते हैं। नाउ द थिंग इज कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज आज की डेट में अभी क्या हो रहा है कि देयर आर फ्यू पीपल लाइक आई थिंक इट्स मैल्कम गोल्डवेल and जैसे बॉब प्रैक्टर थे, he just died, and there are some people who are actually working to make good coaches, and many of the people are working to make money। कि ये कोचिंग की इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है क्योंकि जब भी दो टाइप के सवाल पूछते हैं, अभी कौन सा बिजनेस करूं और जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा पैसे हैं, तो वो ये वाली फील्ड पकड़ते हैं कि कोचिंग चल रही है, चलो मैं भी कोच बन जाता हूँ, या मैं कोचिंग करना शुरू कर देता हूँ, या मैं कोच बनाना शुरू कर देता हूँ, खुद बन जाता हूँ या बनाना शुरू कर देता हूँ। सो व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट, किस चीज में सबसे ज्यादा पैसे हैं, उसमें वो सारे लोग इस भीड़ में जाएंगे। साथ में देयर विल बी सम पीपल हु विल से मैं क्या करना चाहता हूँ। जो लोग इस दुनिया में, एंड दे विल, ये डिवीजन शुरू से था, कौरव और पांडव में भी था, और रामायण के समय में भी था। कुछ लोगों ने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और कुछ लोगों ने बोला कि दुनिया ने क्या बोला है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो लोग दुनिया की सुनते हैं वो हमेशा भीड़ की तरफ जाएंगे और भीड़ बढ़ती रहेगी, लेकिन नाम हमेशा जो होगा वो उसका होगा जिसने अपने आप से पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और उस चीज के ऊपर फोकस किया। तो जो आदमी जेन्युइनली सोच रहा है कि मैं कुछ, आई वांट टू do something for others और share a message, वो अपनी कोचिंग में टाइम लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, फीडबैक लेगा, बेटर काम करेगा, वो धीरे धीरे बेटर होता रहेगा। और ये ऑटोमेटिकली फिल्टरेशन, मेरे हिसाब से फिल्टरेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिल्टर भी अगर कोई और ह्यूमन बीइंग किसी ह्यूमन बीइंग पे लगा रहा है तो किस पैरामीटर पे लगा रहा है पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली दीज पीपल विद स्लाइटली हायर कॉन्शियस, नॉट कॉन्शियसनेस बट कॉन्शियस, कि दैट पर्सन, वो लोग थोड़ा दूर से दिखेंगे, शायद उनका काम बेटर, शायद क्योंकि मार्केटिंग और इससे बड़ा फर्क पड़ता है, आप हो सकता है इनका काम बेटर चले, बट देयर विल बी सम कोचेस इन दिस अरीना वेयर यू विल से दैट यस दीस पीपल आर हार्टफेल्ट, दे हैव नोन एंड ऑल ऑफ दैट। एक मैसेज मैं इसमें और देना चाहता हूं दैट कोचिंग के ब्रांड पे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, बट अगर किसी ने अपनी, मान लीजिए somebody is amputated, किसी का पाँव नहीं है, हाथ टूट गया और वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, बास्केटबॉल, तो obviously he will not go to the best coach in the world, he will go to somebody who is a coach जिसका खुद का हाथ नहीं है और वो फिर भी बास्केटबॉल खेल रहा है। So ये, हाँ, so there will always be this, I don't think there'll be any filtration होगी, हम उसको भी question करेंगे because the human beings ने human को filter करना है, but the main thing is that like in everything else in life there are some people who will raise their conscience to be able to do better work। और रोज हमारी लड़ाई होती है अपनी कॉन्शियंस के साथ कि करूं नहीं करूं, थोड़ा बेटर कर सकता था, थोड़ा नहीं। तो जो लोग उस कॉन्शियंस की लड़ाई को कम से कम एक्नॉलेज करेंगे, आई थिंक वो थोड़े बेटर अपने काम की तरफ बेटर ध्यान देंगे और बेटर कोचेस बनेंगे। और बाकी लोग हैं जो बोलेंगे नहीं सिर्फ मेरे को पैसे कमाने हैं, वो सिर्फ पैसे कमाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। The last question I would like to ask, again, this has been my question since I started working on my project of art therapy. And the question is that I've always learned and heard from people that people who have suffered and who came from that pain can deliver the essence better. Right? This is the normal context, which I have heard from many people. I always had a very contradicting viewpoint to it. Sure. I always felt that whatever you have in your cup, if you have love, you can share love. If you have hatred, you can share hatred. If you have jealousy, you can share jealousy. तो जो आपके पास है वही शेयर कर सकते हो। ठीक बात है। तो अब ये दो चीजें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। So I'll share my viewpoint. मैंने जब आर्ट थेरेपी स्टार्ट किया और टेक्सटाइल का बिजनेस reduced to a level which I can maintain it very easily, and I felt I never had that sort of a feeling that I am suffering and I have to come out of the suffering to get that feeling कि मैं ऐसे बाहर आई तो मैं ये आपके संग शेयर कर रही हूँ। Right. तो मुझे कभी वो फीलिंग आई ही नहीं। तो आई फेल्ट कि मैं तो ये कभी कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये तो इसका पहला पैरामीटर मुझे बताया गया कि अगर आपने सफर किया, सफर से बाहर आए तो आप दूसरों को ठीक कर सकते हो। बट आई ऑलवेज फेल्ट कि जब आप
you have so much of love and feeling inside you, definitely you increase your healing power to a different level. 100%. So how do you feel in this? Because I'm still a bit confused. Recently I was speaking to somebody, then he told me नहीं coaching तो वही कर सकते हैं जिनको suffering हुई हो, वो ज़्यादा अच्छी करते हैं. I said again, I was into a bit of the argument. ऐसा नहीं हो सकता. That's why I'm asking you. See, मेरा again in my understanding ये है, if you're not able to find something, let's say for example बहुत सारे लोग हैं जब let's talk about somebody who's saying I'm trying to find my passion, and when you're trying to find your passion, say मुझे एक्टिंग करनी है, कोई कहता है मुझे पेंटिंग करनी है, कोई कहता है मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना है, कोई कहता है मुझे फोटोग्राफी, तो उस टाइम हम उनको ये नहीं बोलते दैट गो एंड डू समथिंग जिसमें तुम्हारे को खुद चोट लगी है. उसमें हम कहते हैं कि उड़ो, जहां अच्छा लगता है करो, जहां व्हाटएवर इज कमिंग इनटू योर हार्ट वो करो. कोचिंग के टाइम हम बोलते हैं दैट यू आर एबल टू टीच समबडी. Now, if you're able to find something that you love to do, or you wanted to do but you could not do it fully. I wanted to become, for example, you wanted to become a cricketer, you could not become a cricketer, but you can coach other people to become cricketers, and that's coming out of love. But at the same time, there was somewhere आपका कहीं ना कहीं एक सपना था जो अधूरा रह गया, जो आप दूसरे की मदद कर सकते हो पूरा करने में. So there will be some level of commitment and positive pressure on the other person to say कि नहीं मैं इसको नहीं पीछे छोड़ने दूंगा. So that is one way of looking at it. The other thing is that I feel that your message is a message for people who don't have a passion to follow. अगर आपके पास कोई पैशन है मुझे यही करना है तो फिर वही करना चाहिए. But if they say मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूं, so then you look back and see कि ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है. आप 12 साल के हो या आप 80 साल के हो. Like the 80-year-old lady who had come last year, she said इतनी बड़ी joint family में रही हूँ, उनको संभाला है, तो इससे आपका वही that's your thing. एंड बहुत सिरदर्दी होती थी, ये होता था तो उसी को संभालिए, आप दूसरों को हेल्प कीजिए वो करने. सो इफ यू हैव नॉट फाउंड योर पैशन एंड इफ यू डोंट हैव समथिंग दैट यू वांट टू डू, देन यू डू दिस. बट आई डोंट थिंक इट्स लाइक सिर्फ ओनली कुछ नहीं होता. नहीं होता ना. जहां भी कोई that give me such a relief, because I always I have like seen people who've been asking me, no, there must be some pain, find out. I said I don't have any pain. Where do I find it out? I am happy with what I'm doing, and I'm happy with what I'm sharing with people, and it is increasing, it is improving. The power is increasing, but why do I have to find the pain? Why do I have to sit and see कि मेरे को क्या pain था? मेरे को कुछ था नहीं. And I'm happy to feel. मुझे ये लगता है that there are some basic rules. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लिखे हैं, मैं चेंज करता रहता हूँ. Like apart from gravity and all of these, ये तो एक अलग principles हो गए. There are some rules I feel don't consciously try not to hurt anybody, because that's bad. कुछ भी करो, try not to hurt people. And तो कुछ ऐसे rules हैं, उसके अलावा कोई rule नहीं है. उसके अलावा कुछ rule नहीं है. There is just no rule. And actually going and asking people if I'm right or wrong, you just ask yourself and make reliance on yourself. If you think it's, because at that point in time, unless, see, if we are consuming some kind of alcohol, और if we are in a very negative mindset, तो हमको उस टाइम जो हमारे thoughts हैं उसको मैं trust नहीं करूँगा. But अगर एक normal meditation mind चल रहा है, अच्छा हफ्ता चल रहा है मेरा, then I should not trust anybody but my thoughts. So if your thoughts are saying something, then nobody should be able to come and say कि इसके लिए ये एक ऐसा rule होता है. You solved a very big thing for me today. So like that question is solved. I really wanted to ask you on this question. This was coming again and again. Okay. I'm sure that you are a great inspiration where you balance your life experiences with the work. So what message you would like to give to all the entrepreneurs, how to balance their life and work? There is a lot of imbalance. And being a therapist, sure. major 90% of the people I would say who come is because of their imbalance in between the work and life. Okay. See, what happens is, according to me, मेरे हिसाब से बैलेंस का वो एक बड़ा भ्रम है मार्केट में कि बैलेंस का मतलब ये है मैं 4 से 5 ये करूंगा, 6 से 7 ये, शाम को ये, रात को ये, और रोज करूंगा 10 साल तक. और ऐसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता. जब आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं तब आप अपने रिश्तेदारों को सबको भूल के 6 महीने सिर्फ पढ़ाई करते हो, फिर निकलते हो. फिर I feel balance is just your satisfaction with your mindset and heart set and soul set. Perfect. I'm satisfied totally. Perfect. So then I love that answer. I think that is a much better answer
Because ये मैंने कभी नहीं सुना ये वाली बात. I think it's a beautiful answer that your balance and your happiness, if you're feeling good, that हाँ मेरा वो ठीक चल रहा है, तो you're balanced at that point. Perfect. Awesome. Radha, thank you very much for taking the time out. And awesome, all of you people, follow it on Instagram. And this entire episode, watch it twice. And I'm going to give you Raadha Shalini's Instagram handle to follow as well. Go and see all the amazing work that she's doing. And for all of you people who are watching and subscribing and you've given us your time, thank you very much. What we have is caps, hoodies, and at the end of the event, we have a 1+8 going out for all the subscribers who are engaging. So engage with us, comment, bring in your friends, and look forward to making this show a success with your support. Thank you very much. This is Avi Arya signing off for now.